हाय गाइस, वेलकम टू द डॉक्टर्स इन डार्क। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइकेट्री एंड फार्मेकोलॉजी का कंबाइंड सेशन 5 MCQs फॉर द नीट पीजी सीरीज एपिसोड 4। और अगर इससे पहले हम शुरू करें, आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल डॉक्टर्स इन डार्क। और चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, अ पेशेंट स्टॉप्ड अल्कोहल कंजम्पशन प्रेजेंट विथ इरिटेबिलिटी, डिसओरिएंटेशन, paranoid delusions, agitations, visual hallucinations, altered sensorium, which is diagnosis। तो ये आंसर है अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के, और ये इसका आंसर है डिलीरियम ट्रेमंस, जिसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में देखेंगे। अभी जानते हैं विच ड्रग लिस्टेड बिलो इज यूटिलाइज्ड एज एन एजेंट फॉर स्मोकिंग सीजेशन। इसका आंसर है वेरानिक्लिन, और ये भी है स्मोकिंग सीजेशन रिलेटेड ड्रग्स के बारे में। तो ये है साइकिफार्म। और क्वेश्चन 2, इसका आंसर है वेरानिक्लिन, विच ड्रग लिस्टेड बिलो इज यूटिलाइज्ड एज एजेंट ऑफ स्मोकिंग सीजेशन। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। क्वेश्चन 3, ट्रू फॉर लिथियम। तो इसका आंसर है नेरो थेराप्यूटिक इंडेक्स। लिथियम नेरो थेराप्यूटिक इंडेक्स इज 0.5 to 0.8 milligram per liter. More than 2 milligram can lead to the milligram per deciliter can lead to the toxicity. Atypia antipsychotics with least metabolic side effects. Atypia antipsychotics with least metabolic side effect is a ziprasidone। और अभी हम जानते हैं क्वेश्चन 5, schizophrenic patient was prescribed drug after he not respond to haloperidol and thioridazine presence with excessive salivation, increased blood glucose and hyperlipidemia. Then what is the drug? The schizophrenia which not respond to haloperidol and thioridazine is called as a resistant schizophrenia, and the drug of choice for the resistant schizophrenia is Clozapine। चलिए अभी ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस, और चलिए अभी पढ़ते हैं वन बाय वन दिस टॉपिक के बारे में। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, डिलीरियम ट्रेमंस अकर्स आफ्टर 48 आवर्स ऑफ अल्कोहल सीजेशन एंड स्टे अप टू 5 डेज। यानी कि 72 आवर्स, यानी कि 3 दिन के बाद अगर कोई पेशेंट की हिस्ट्री दी जाएगी आपको कि पेशेंट कम टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड पेशेंट सिम्टम्स लाइक कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, चेंजेस इन कॉग्निशन एंड परसेप्शन, rapid unpredictable mood swings and autonomic hyperactivity, excessive activity of autonomic nervous system, tachycardia, high blood pressure, sweating, fever, experience tremors especially in hands। तो ये सारे सिम्टम्स आपको दिए जाएंगे 72 आवर्स ऑफ अल्कोहल सीजेशन के बाद। तो ये है अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, डिलीरियम ट्रेमंस। Delirium tremens, psychomotor agitations, restlessness, agitation, inability to sit are still common features. Purposeless movements, pacing and irritability, insomnia, vivid and unpleasant dreams, nausea and vomiting and tremors that can be seen in the delirium tremens। इसकी ट्रीटमेंट है बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपाइंस, डाइजेपाम एंड लोराजेपाम कैन बी गिवन टू द पेशेंट ऑफ द डिलीरियम ट्रेमर्स। इससे पहले हम जानते हैं अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के 3 फेजेस के बारे में। सबसे पहला फेजेस है अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स का, जो कम इनटू लेस देन 8 आवर्स। पेशेंट्स फील्स लाइक having tremors is the most common symptoms within the less than 8 hours of the alcohol withdrawal symptoms. Also patient feels nausea and vomiting after 8 to 12 hours. The patient feels like he has a hallucination, and hallucination can be seen after 8 to 12 hours in alcohol withdrawal symptoms. And after more than 72 hours of the time, delirium tremens can be seen, and in delirium tremens the patient has seen the symptoms we can see like tremors, confusion, disoriented cognition and perception, rapid unpredictable mood swings like CNS symptoms that can be seen in alcohol withdrawal symptoms. It's called a delirium tremens। तो ये 3 फेज है alcohol withdrawal symptoms के less than 8 hours। First symptoms can be seen sensitive symptoms, nausea, vomiting and tremors, and second symptoms can be seen hallucination, and third withdrawal phase is delirium tremens। तो ये थे हमारे अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में। अभी जानते हैं स्मोकिंग सीजेशन के बारे में। इज एंटी स्मोकिंग ड्रग्स लाइक वेरानिक्लाइन target nicotine receptor in the brain. It reduces craving and withdrawal symptoms associated with nicotine addiction started few weeks before the quitting. Any smoking cessation drugs can started few weeks या 1 to 2 weeks before the cessation, because it takes a time to patient to de-addicted the symptoms. So इसके लिए हमें
2 या 3 वीक पहले कोई भी एंटी स्मोकिंग ड्रग या स्मोकिंग सीजेशन ड्रग स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जांपल वेरेनाक्लाइन जो निकोटिनिक रिसेप्टर पर इफेक्ट करती है, बुप्रोपियोन इज सेम एज अ वेरेनाक्लाइन बट लेस इफेक्टिव देन वेरेनाक्लाइन, also effect decrease the craving and withdrawal symptoms associated with nicotine addiction. Best therapy is nicotine replacement therapy which can available in nicotine patches, gums, nasal sprays, lozenges, inhalers, relieve withdrawal symptoms. ये है निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरापी जो कॉमनली यूज होती है। इसके अलावा वेरनिक्लाइन इज नाउ कॉमनली यूज्ड and bupropion is not commonly used as compared to varenicline because it is not much effective. This is the smoking cessation. Now see the lithium. Lithium is a medication used in psychiatry for several decades, primarily in the treatment of mood disorder, particularly bipolar disorder. Lithium is a drug of choice for bipolar disorder associated with family history. मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। ये साइकी फार्म है तो साइकेट्री भी ऑफ कोर्स हम पढ़ेंगे आज। तो साइकेट्री में बाइपोलर डिसऑर्डर इज सजेस्टिव ऑफ देयर इज अ फैक्टर कॉल्ड एज अ BDNF factor in the brain which is produced by the brain to maintain the normal level of BDNF that can lead to the not so much depressive phase, not so much excited phase. So maintains the normal level of BDNF in the normal person. But in bipolar disorder there are two phases. In depressive phases decrease BDNF factor and in mania phases increase BDNF factor. So that can lead to the disorders like bipolar disorders. In one phase there is a depressed patient feels like depressed and in one phase patient feels like very much excited. तो इस तरह के दो फेज होते हैं BDNF फैक्टर की मदद से। अब ये BDNF फैक्टर कंट्रोल बाय द लिथियम, तो लिथियम BDNF फैक्टर के लेवल को मैनेज करता है और अगर BDNF फैक्टर का लेवल कम हो तो इसको बढ़ाता है और BDNF फैक्टर का लेवल ज़्यादा हो तो इसको कम करता है। तो ये है हमारा साइकेट्री रिलेटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द BDNF एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। चलिए अभी हम पढ़ते हैं लिथियम के बारे में। Mechanism of action of lithium is maintain level of BDNF, mood stabilization, so useful for depression in low BDNF and mania high BDNF, used in bipolar disorder treatment. Additional use, major depressive disorder and schizoaffective disorder, but not a first line drug for this. Side effect is teratogenic, cause abstain anomaly in the pregnancy to the fetus, very narrow therapeutic index 0.5 to 0.8, more than 2 mg can cause toxicity, and fine more than 2 mg plasma concentration can cause toxicity. In toxicity, fine hand tremors, increased thirst, weight gain, kidney function test abnormality and GI symptoms can be seen. Atypias antipsychotics. Atypical antipsychotics. Haloperidol first generation antipsychotics have extrapyramidal side effects. Risperidone is a atypical antipsychotic drug, more extrapyramidal side effect, hyperprolactinemia and more metabolic side effects like weight gain, hyperglycemia, nausea and vomiting. तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हेलोपेरिडोल इज अ फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स which is more effective and first line treatments is used in some cases, but it has a more side effects like extrapyramidal side effect and metabolic side effect. Risperidone is a atypical antipsychotic drugs, more extrapyramidal side effects. Atypical antipsychotics has a less extrapyramidal side effect as compared to the typical antipsychotic, but in atypical antipsychotics, haloperidol has a more extrapyramidal side effect. Hyperprolactinemia, increased prolactin level, more metabolic side effects. अब जानते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के बारे में। क्विटियापिन एडवर्स इफेक्ट इज सोमनोलेंस, हेडेक, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन, एलिवेटेड प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल. ड्रग्स दैट हैव लीस्ट मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स इज जिप्रासिडोन एंड एरिप्रिप्राजोल. सॉरी, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक. हियर इज द not alprazolam, here is the aripiprazole and ziprasidone. This is the advanced type of atypical antipsychotics which has a least metabolic side effects. अब जानते हैं क्लोजेपिन के बारे में. इट्स एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया. साइड इफेक्ट इज अ सीडेशन, वेट गेन, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन.
Clozapine can cause seizures. Dose dependent more than 600 milligram can cause seizures. Agranulocytosis. Decreased WBC main reason for withdrawal from market is agranulocytosis. Myocarditis, chest pain, dyspnea and abnormal ECG can seen with the clozapine. तो clozapine is साइड इफेक्ट ये सारी है और ये एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है. तो चलिए अभी हम क्वेश्चन फिर से देखते हैं और जानते हैं कि कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. पेशेंट स्टॉप्ड अल्कोहल कंजम्पशन प्रेजेंट विथ इरिटेबिलिटी, डिसओरिएंटेशन, paranoid delusion, agitation, visual hallucination, altered sensorium. What is the diagnosis? तो irritability, disorientation, paranoid delusions, agitation, visual hallucination, altered sensorium. The patient stopped alcohol consumption. सो ये सारे सिम्टम्स सजेस्ट करते हैं अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स. डिलीरियम ट्रेमन्स के बारे में. वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी एंड कोरास्कोप साइकोसिस also seen with alcohol consumption but not a withdrawal symptoms. Wernicke's encephalopathy is seen with the thiamine deficiency, and in the patients with alcohol consumption give thiamine with the lorazepam or benzodiazepines in Wernicke's encephalopathy. Alcohol induced psychosis. Thiamine is an important vitamin that can give in the alcohol consumption present consumption present patients. Thiamine that can reduce the side effects of the alcohol consumption, because patients of the alcohol consumption have a liver effect and liver cannot act through the thiamine synthesis and thiamine storage, and that can lead to the thiamine deficiency in alcohol consumption patients. अभी जानते हैं क्वेश्चन 2. विच ड्रग लिस्टेड बिलो इज यूटिलाइज एज एन एजेंट फॉर स्मोकिंग सीजेशन. वेरानिक्लाइन इज अ ड्रग ऑफ used as an agent for smoking cessation. Same episode, same MCQ asked in the NEET 2-year examination, and in that given varenicline and bupropion. There's 2 option is given and answer is A and C both, because bupropion is also used in the smoking cessation. Question 3. True or false lithium. Lithium is a narrow therapeutic index. Delayed absorption is not associated with symptoms. Protein bound is not associated with lithium and can be given safely. Renal dysfunction is also not associated with lithium, because renal dysfunction can lead to the lithium toxicity. Question 4 is atypical antipsychotics with least metabolic side effects. Atypical antipsychotics with least metabolic side effects is a ziprasidone and aripiprazole. Both are in the option, then answer is both. Aripiprazole more than ziprasidone. Question 5. A schizophrenic patient with prescribed drug after he not respond to haloperidol and thioridazine, present with excessive salivation, increased blood glucose and hyperlipidemia. What is the drug? The question is suggestive of a resistant schizophrenic disorders, and that can lead to the clozapine as a drug of choice. And side effect of the clozapine is a seizure, nausea, vomiting, metabolic effect, hyperglycemia, etc., which can we understand and we read before, like increased blood glucose and excessive salivation. So answer here is a clozapine as a drug of choice in resistant schizophrenic patient. तो ये था हमारा आज का वीडियो, साइकेट्री एंड फार्मेकोलॉजी कॉम्बिनेशन. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू for the watching, and please like and subscribe the Dr. Saint Dark, and have a good day.